सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में एक स्टेप चेंज दिया जाता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन होता है, जी एस इक्वल टू वाई बाय एस, वाई एस बाय एफ एस इक्वल टू के पी बाय टाउ पी एस प्लस वन। सो नाउ वी आर राइटिंग द स्टेप चेंज। सो for step change of magnitude a, this ft input can be defined as ft equal to a. So this is the step change of magnitude a. If I take the Laplace transform of this, then what will happen? This ft will get converted to fs and a will get converted to a by s. Now what will I do? I will put this fs equal to a by s in this equation. Okay, then it becomes ys equal to a by s into kp upon tau p s plus 1. So now I am factorizing this one. So this becomes akp by s minus akp tau p by tau p s plus 1. So now what I am doing, I am taking the Laplace inversion of this equation. Okay, so this ys gets converted to yt and akp by s. So 1 by s gets converted to 1 when we take the Laplace inversion, and 1 upon tau p s plus 1, that gets converted to e to the power minus t by tau p. Okay, so this equations become, after taking the Laplace inversion, this equation becomes yt equal to akp 1 minus e to the power t by tau p. So now we will see the different components of this equation. तो yt है मेरा आउटपुट डेविएशन वेरिएबल. Okay, a is my step change of magnitude. So I can write it step change magnitude kp. This is called static gain or steady state gain, and this tau p is my time constant. Okay, so this is an exponential equation. I am giving this equation as equation number 1. So if I plot this equation and if I take t in x-axis and yt on y-axis, and if I plot the graph between t and yt, so we get a graph like this. It is a exponential graph. Okay, and this akp will be my final value of response, or I can say it ultimate value of response, or I can also say the new steady state. That means the process earlier it was at this point, and after a change it it becomes akp, the output becomes akp. Okay, now from this equation number 1 we will see the characteristics of this first order system. Okay, so first characteristic is this equation is self-regulating. The system is self-regulating. That means if you are giving some change to the system, so my response will get a new steady state. That means earlier
the response was at this place, and when we give the change to the response reaches here. Okay, so एक नई स्टडी स्टेट को अटेन कर लेता है. ओके, तो दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स आर कॉल्ड सेल्फ रेगुलेटिंग. दैट मीन्स वो खुद को रेगुलेट कर सकते हैं. अगर उनमें किसी भी प्रकार का कोई इनपुट दिया जाता है तो वो कुछ टाइम बाद एक नया स्टडी स्टेट लेते हैं और एक उसी स्टडी स्टेट को फिर वो अचीव कर लेते हैं, उसी स्टडी स्टेट पर वो रहते हैं. Now we'll see the second property of this first order system when it is given a step change. So if I calculate the initial rate, okay, so for calculating this initial rate, I am writing dyt by dt at t equal to 0. That means I am differentiating this equation with respect to time t, and I am calculating the slope at time t equal to 0. Okay, so I am differentiating this equation. So ultimately when we are differentiating, so it becomes akp. This is a constant term, and differentiation of 1 is 0. It is 0, and differentiation of e to the power minus t by tau p. So this becomes 1 minus tau p into minus e to the power minus t by tau p. Okay, now if I put t equal to 0 here, so then it becomes akp upon tau p. तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्स का स्टेप चेंज के लिए अगर हम इनिशियल रेट कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स स्लोप एट टाइम t इक्वल टू 0, देन इट कम्स आउट टू बी akp अपॉन tau p. ओके, तो अगर यहां पर हम लोग इस फिगर में अगर हम लोग इस कर्व को प्लॉट करेंगे, इस कर्व को हम लोग इनिशियल अगर रेट देखते हैं एट t इक्वल टू 0, तो इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो और इसका स्लोप होगा akp अपॉन tau p. नाउ हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं. इफ दिस इनिशियल रेट इज मेंटेन, सपोज my slope is constant, initial rate, that means my slope at t equal to 0 is maintained, is kept constant, then what will happen? What will be the behavior of the response? So how will I calculate this one? So I am assuming the equation y equal to mx. Okay, this form of equation. So here y is my yt, m is my slope at t equal to 0, akp upon tau p, and x is my time t. Okay, so I am considering this equation y equal to mx. Now if I put time t equal to tau p here, okay, so if I put time t equal to tau p, so yt will become akp. That means if I see from the graph, so this point is my tau p. So at time tau p, if I kept the initial rate of response constant, then at time tau p I will reach at steady state akp. Okay, so or I can say system will reach to new steady state in time tau p if the initial rate is maintained constant. Okay, so first property is self-regulating. That means the system reaches to its new steady state. Second property is
if the initial rate is maintained, if the initial rate is kept constant, then the system will reach to a new steady state in time tau p. Okay, now I will see the third property. when t equal to tau p, अगर हम इस इक्वेशन वन में if I put t equal to tau p, then what will happen? Yt will be akp 1 minus e to the power minus 1. So अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो that will become 0.632 into akp, or I can say that it is 63.2% of akp. Okay, तो यहां से हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, जो कि अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जिसमें कि हम लोग एक स्टेप चेंज देते हैं, तो व्हेन t इज इक्वल टू टाउ पी, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो अल्टीमेट वैल्यू के 63% होता है. ओके, सो इस तरीके से हम लोग अगर टाइम कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं. सो आई कैन डिफाइन एज टाइम टेकन बाय द प्रोसेस टू रीच 63% ऑफ द अल्टीमेट वैल्यू इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट. ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक टाइम कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो टाइम कांस्टेंट tau p that deals with fastness of system. ओके, अगर मान लो मेरा टाउ पी की वैल्यू अगर दो सिस्टम है, तो जिस सिस्टम के लिए मेरी टाउ पी की वैल्यू कम होगी उसका रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि 63% ऑफ द अल्टीमेट वैल्यू वो जल्दी रीच करेगा. तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे सिस्टम की वैल्यू का मेरा टाउ पी कम है तो सिस्टम का रिस्पॉन्स ज़्यादा तेज होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम लोग t की वैल्यू अगर हम लोग इन्फिनिटी पुट करते हैं, दैट मीन्स व्हेन द टाइम इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन yt विल बिकम इक्वल टू akp. तो यहां पर मैं kp को डिफाइन कर सकता हूं. जब मैं t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर रहा हूं तो मेरा जो रिस्पॉन्स है yt, दैट इज बिकमिंग इक्वल टू akp. तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एट टाइम अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स दैट विल डिपेंड ऑन kp. Okay, that means my new steady state will depend on kp. So that is why I'm writing kp is called the steady state. That is why it is called a steady state or a static gain. Okay, because if I put value of a equal to 1, if I consider a unit step change, so yt, when t tending to infinity, then yt will become equal to kp. So in this way I can say kp is called the steady state or a static gain. Okay, so in this way we can define kp, or so kp is the steady state value. Kp is the steady state value or ultimate value of response when the process is disturbed by a unit step change. Okay, so if I put a equal to 1, then yt will become equal to kp. So in this way we can define kp.
Kp is my ultimate value of response when process is being disturbed by a unit step change, or when we are giving a unit step change to the process. So I can write it like this: delta output equal to Kp times delta input. That means my final output will depend on Kp and input. Okay, so I can say, suppose if my output is constant, okay, if I am keeping my output as constant, if I want to keep this output as constant, and if my input is less, so my Kp should be high. Okay, and if I want to keep my output as constant, so if delta input is high, so I can keep a small value of Kp. Okay, so for same input, if my Kp is less, so I will have to give more input to the system, or for same output, if my Kp is high, so I can give less input and I will get the desired output. Okay,